coping with Corona time. So it will be, I would like to welcome our guest speakers, Mr. Rajesh Sharma and Mr. Kamlesh Dharij. This is the novel initiative taken up by DITF. So this is a support center we have launched a week back. We have a team of doctors and industrialists and the people who will help you in counseling in your tough time. So I would like to congratulate our team of a team which consists of Dr. Subhash Dharij, who is a surgeon and MD of Arogya Hospital, Vishakhapatnam, Dr. Gaurav Dharij, who is homeopathic consultant and counselor in Jaipur, Mr. Sri Krishna Daima, who is industrialist and entrepreneur in Nagpur, Ms. Minakshi Dharij, she is MA in psychology and she is also a social worker, CA Rashmi Daima, she is a exponent and certificate holder of law of attraction. So she has already organized one of the seminars. She was a speaker in one of the seminar, which we have also conducted in past days. So I would like to you all that you should spread this novel initiative of DITF, and that can help us various or varied kind of people to understand and to discuss their queries with our team. You guys can spread this thing and tell people to mail us on ditfindia@gmail.com, or we have already generated one Google form. You can also fill that Google form and send us your responses. We will connect you to our respective team member, so they will guide you as soon as possible. This is the upcoming webinar, which is coming on 16th May. It is on planning to buy a home, and which will be presented by CA Madhusudan Dharij, who is a technical education and skill development expert advisors to government in Rajasthan. The panel speakers are Mr. Hanuman Asopa, who is an MBA and Chief Officer, Real Estate Department in ICICI Bank, and CA Anirudh Dharij, who is practicing chartered accountancy. So it will be happening on 16th of May. So this is how we will go in today's webinar. There will be moderation done by Mr. Virendra Sharma. We'll take the views from our respected panelists. So I would like Mr. Virendra Sharma to take care. Before that, I would want to introduce them. Mr. Virendra Sharma, Global VP in Glenmark in the Taxation and Accounts Department. He is an ex-Aircel and ex-Ramba. He is belongs to ex-Rax as well, having a very good experience in industry. So I would want Mr. Virendra Sharma to take it up from here. We just wanted to announce one thing. We have a surprise video for everyone before we conclude today's session. So Mr. Virendra Sharma, I would request if you can take it from here and make it a success to this webinar. Thank you, everyone. Yeah, thanks, Krish. So these are the links from which you can reach to us. Thanks, Krish. Thank you very much. So, first of all, many thanks to Deveshji for organizing this forum, which caters to all current topics and really very helpful to means everyone in our Dharij community and bringing all of us together. And it is not only being attended by people as we see today, by people in Mumbai or in India. It is across globe, I think, and it will slowly, gradually, and it will become very famous day by day as we move ahead in this journey. So, and then again, thanks to Deveshji for giving us an opportunity to share our view on this COVID pandemic, which is really disturbing everyone family and everyone's life. So today we are going to discuss many issues related to COVID pandemic faced by India, especially the second wave that we all of us are looking at. So we have got two very important personalities who are going to be our panelists today. They have been very active in social activities, and they are
truly speaking, means do their work in society without any return. And they have been helping everyone during this bad phase of time with their own resources, whatever it is. And means truly speaking, these type of people are very few, means to find in the society. So now happy to introduce Kamlesh ji and Rajesh ji, who are our panelists today. So Kamlesh ji is an active social worker, and he is presently means also serving as a secretary to Dadi Samaj Mumbai. And he is a qualified engineer and is a director as at Surgix Healthcare. And he's a businessman doing his own business. Simultaneously, he is looking after social activities as well, and that too with full enthusiasm and means great interest, I'll say. Rajesh ji is serving as president in Dadi Samaj Mumbai, and he again is a very active social worker, and he is associated with many other societies, social organizations who do social activities, and he is also an active member of Bharatiya Janata Party, and he's a businessman doing his own work and has got many firms, and means uh, again means how do these both of them take out time from their busy schedule? We need to understand from them. As you all know that COVID has been means become a nation disaster as of now, and it is disturbing all of us. So means there are many issues which have come up and which we are going to discuss with our panelists who will try guide us and help us how to overcome the situation wherein we are, and how did they do in the past also. So means now I think we can start. So Rakesh ji, I just we just want to understand that what is the difference between the situation in the first wave of COVID and which happened in 2020 and the second wave of COVID, which is currently going on in 2021. So what are your views? How both these are different? विजेंद्र जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। DITF को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और खुद के लोगों से बात करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवेश जी भाई साहब को। 2020 का कोविड और 2021 के कोविड में बहुत बड़ा अंतर है। 2020 के कोविड में जो हम लोगों की जो मानसिकता थी और 2021 के कोविड में जो अपनी मानसिकता थी, उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। 2020 के कोविड में अगर एक भी पेशेंट कहीं सुनाया जाता था कि कोविड पॉजिटिव है, तो हम डर जाते थे, हमारे घरों में बंद रहते थे। 2021 के कोविड में ये है कि 4 लाख हो गए, फिर भी हम बाहर घूम रहे हैं और हमें डर नहीं लग रहा है। हम खबरें सुन रहे हैं कि ऐसा हो गया, रोज कुछ ना कुछ बुरी खबर आ रही है, फिर भी हम डर नहीं रहे हैं। हम फिर भी निकल जाते हैं, कुछ काम होता है तो क्या लोगों के दिमाग में ऐसा है कि कुछ हमें मुझे कुछ नहीं होगा। एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है। 2020 में हम सब हर चीज से सावधान रहते थे, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे हाथ धोना हो, चाहे घर पे आके नहाना हो, चाहे मास्क लगाना हो, बाहर से प्रेस के कपड़े आ रहे तो भी 5 दिन उसको बाहर ही छोड़ रहे हैं, सब्जियां आ रही है तो उसको 5 दिन के बाद ही ले रहे हैं। पर अब ऐसा नहीं कर रहे हम लोग अपने दिनचर्या में। हमारा सैनिटाइजर यूज करना कम हो गया, मास्क हमारा मुंह के नीचे रहता है, ये सारी चीजें आ रही है। और जो कोविड 2020 वाला और 21 वाले कोविड में काफी फर्क है। अब जो कोविड आया है ये काफी नुकसानदायक है, काफी जाने ले रहा है, ज्यादातर यंगस्टरों को ज्यादा नुकसान कर रहा है। आज भी हमारे समाज का एक युवा CA कोविड की वजह से एक्सपायर हो गया वसई में। मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे। हमारे DITF की एक्टिव मेंबर भाई साहब बोलेंगे उसके बारे में। उनकी माताजी 3 दिन पहले कोविड से सीकर में एक्सपायर हो गई, उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। समय बड़ा विकट है और ये जो कोविड जो 2021 का है, इससे हमको कोई बचा नहीं सकता है, इसको सिर्फ हम ही बचा सकते हैं। लोग प्रशासन को, सरकारों को, इनको शिकायत करते हैं ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, पर सबसे बड़ी चीज है कि हमें कोई नहीं बचा सकता है, हमें इसको सिर्फ हम ही बचा सकते हैं।
हम अगर अपनी सावधानी नहीं रखेंगे तो ये कोविड हमारे लिए बहुत घातक होगा, हमारे परिवार के लिए बहुत घातक होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2021 का कोविड है, ये अपने लिए बहुत खतरनाक है। अपने आप को इससे बचाना चाहिए। Kamlesh ji, do you want to pitch in here that your views on the situation between 2020 and 2021 COVID situation? Kamlesh ji, you are on mute. No, you are still on mute. I think we need to unmute Kamlesh ji. Oh, okay. Now, yes. Are now you it's able to hear fine. me now? Yes, it's fine now. मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूं for giving me an opportunity to speak on this. ये जो कोरोना है has become a traumatic situation for almost everybody involved in the country, especially the second one. And this trauma is mostly due to the loss of life and due to इससे ज़्यादा अधिक is due to the helplessness of the people. You know, people are not able to understand कि अगर किसी को एक मामूली सा एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए या some even ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रेगुलेटर चाहिए वो तक नहीं मिलता. So there is a trauma. There is a difference between the two era which we had the last year's COVID, which we declared very early as we have won the war, and in this particular year's COVID, most important thing is rather there's a panic which has started creeping into everybody's mind. So that is what I can tell about this particular period of COVID, which is happening in 2021. And what we need to do is keep our minds cool, no panic, and coordinate with all of the doctors and nurses. Hats off to them, whatever they are doing their best in the situation. आज वो वहाँ मौजूद हैं और हमारे लिए दिन रात लगे हुए हैं repairing all those PPE kits and which is unimaginable. So मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ and salute them for that. So to summarize, I think both panelists are of the view that we should not create panic, and we don't get panic during this tough time, and we should keep our patience and help each other, and means follow the strict guidelines. This is what I think the message that both of them want to give to us. Now, the next point is that means during the last pandemic situation in 2020, you had through your resources and through your means and through your links, you had organized a big vaccination camp among all Dhadish brothers. And can you share us your experience during that time? What challenges did you face? How did you manage it? And how did you means how were you able to manage all these activities? So Rajesh ji. सर 2020 में जो कोविड का प्रकोप था, उस टाइम सबसे बड़ी समस्या थी वो जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके खाने की समस्या थी। आपके हमारे जैसे लोगों के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि हम उस टाइम हमारे व्यापार भी अच्छे थे, काम धंधा भी अच्छा था, लोगों के पास सेविंग्स भी थी, लोग अपने घरों में थे। पर जो मजदूर थे, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उनके साथ बहुत बड़ा चैलेंज था जीवन यापन का, खाना खाने का, इन सब चीजों के लिए। तो उसके लिए हमने लास्ट ईयर में 1-2 संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ, उनके साथ जुड़ के हमने काफी सोशल वर्क किया था। उसमें हम लोगों को खाना पहुंचाते थे। उसमें 2-3 कैटेगरी थी। जो लोग परिवार लेके बैठे हैं और बम्बई से नहीं जा पाए, तो उनको हम पूरा राशन का किट पहुंचाते थे। तो हमने, आप देखिए, मुंबई, कांदीवली, मलाड से लेके पालघर तक लगभग 20,000 परिवारों को हमने खाना पहुंचाया था 2 संस्थाओं से मिलके। उस दरमियान बहुत सारे चैलेंजेस आते थे। कभी राशन खत्म हो जाता था, कभी चावल नहीं मिलते थे, तो ये सब चैलेंज भी आते थे। तो उसको भी हम किसी न किसी तरीके से मैनेज करते थे। उस दरमियान जब वो सोशलिज्म करते थे तो रोड पे निकल के करते थे। तो उसी पीरियड में ऐसा महसूस होने लग गया कि कुछ लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए काम कर रहे थे वो पॉजिटिव होने लग गए, बीमार होने लग गए। फिर हमने उसका तरीका चेंज किया
हमने फिर अपने आप को रिजर्व किया और फोन पे काम करने लग गए। फिर जिस जिस एरिया में जहाँ मदद की रिक्वायरमेंट होती थी उस एरिया के एक आदमी को पकड़ के या उसी स्वयंसेवक को पकड़ के उसको हम एक्टिव करते थे और उसको जवाबदारी देते थे, उसके हिसाब से उस एरिया में मदद करते थे। तो इस तरह की एक्टिविटी हमने उस टाइम की। अब जब 2021 में जो ये चीजें हुई, इसमें जरूरतें अलग है सर। इसमें लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, लोगों को बेड चाहिए, लोगों को इंजेक्शन चाहिए, लोगों को फाइनेंशियली मदद चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें हम कोशिश कर रहे हैं, करते हैं जहां तक पहुंच सकते हैं। बहुत अभी कुछ लोगों को बेड दिलाने में हम सक्षम भी हो गए, कुछ लोगों को नहीं दिला पाए। कुछ लोगों को हम इंजेक्शन दिलाने में सक्षम हो गए, किन लोगों को नहीं दिला पाए। किन्हीं को प्लाज्मा चाहिए, कुछ प्लाज्मा की व्यवस्था हो गई, कहीं नहीं हो पाई, क्योंकि अब परिस्थिति अलग तरीके से है। हॉस्पिटल भी फुल है, आपके सोर्सेस हैं तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो उनको मदद के लिए। तो इस तरह की चीजें हैं, फिर भी हम उसमें कर रहे हैं। बीच में वैक्सीन का हमने एक प्रयास किया, दादी समाज के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, हमने एक प्रयास किया कि उनको वैक्सीन लग जाए। तो मुंबई दादी समाज के 20-25 सीनियर सिटीजन ने उसका लाभ लिया। हमने मलाड में एक हॉस्पिटल से टाइप किया, उस टाइम उनको वैक्सीन लगी और हमारे उसमें वॉलंटियरों ने काफ़ी अच्छा काम किया। हमारे विवेक जी इसमें थे जो अभी जुड़े हुए हैं, हमारे सुशील भाई जुड़े हुए हैं वो थे, हमारे प्रशांत शास्त्री जी थे, मैं खुद वहाँ था, हमारे अशोक मिश्रा जी थे। तो हम लोग सबने मिलके एक अच्छा, हमारे अंजनी दादी जी थे, तो हम लोगों ने सबने मिलके एक वो ड्राइव चलाई थी, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और काफ़ी लोगों ने उसमें लाभ भी लिया। तो इस तरह की एक्टिविटी हमने की। अभी बीच में हमने एक एक्टिविटी और स्टार्ट करी है, एक संस्था से जुड़ के एक एक्टिविटी स्टार्ट करी है कांदीवली लोखंडवाला में, मैं वहीं रहता हूँ। तो जितने परिवार हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, तो हमारे यहाँ पे कुछ बिल्डिंगों में क्या पूरा पूरा परिवार ही पॉजिटिव हो गया, 4 लोग 5 लोग। तो उनको खाने की बड़ी समस्या है, तो बेचारे खाना कहाँ खाएं, होटलों का रोज खाना नहीं खा सकते। तो हमने अभी उनके लिए टिफिन की व्यवस्था शुरू कर दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वैसे परिवारों में रोज के लगभग 70 परिवारों में दोनों टाइम का टिफिन उनको जाता है, पूरे परिवार का खाना उनको जाता है और काफी सेटिस्फाइड हैं वो लोग। उनकी प्रॉब्लम काफी हद तक, जो खाने की प्रॉब्लम है, वो हमने खत्म करने का काम किया है। निरंतर ऐसे ही कुछ ना कुछ आइडिया आप लोगों से, मिलने जुलने वालों से मिलते रहते हैं, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी अब हम कर रहे हैं अभी इस दौर में। सो कमलेश जी, आपने भी पीछे काफी मतलब ब्लड कैंप वगैरह लगाए थे एंड यू हैड आल्सो ऑर्गेनाइज्ड मेनी अदर सोशल एक्टिविटीज. So, what kind of challenges did you face during those organizing blood camp? And remember that you had got it organized on VT, which is a very busy platform. So, how did you manage it at such a crowded place, a blood camp being organized? Can you please throw some light on that? Certainly, I remember very well that particular camp which was organized during that time. There was a massive involvement of so many people, and there was a grand preparation from the entire Samaj in the first place. Okay, तो हम जो है उसमें पूरा समाज ने उसका एक बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करी थी उसमें. There was a lot of contribution which came in from the members, active members of the Samaj, especially Mr. Sushil Dadij, and I would definitely name Mr. Jaiprakash Sharma also, a chartered accountant from Andheri, Borivali. And they have put in a lot of effort to make the structure fit enough to do that particular thing. उसमें हमें बहुत अच्छे से याद है मुझे को. I was continuously there in that area, seeking permission from the police, from all the relevant departments, everywhere, and उसमें करीब 4 दिन लग गए थे. The second thing was to bring the donors. हम ये चाह रहे थे कि हमारे समाज के डोनर्स जागरूक हो जाएं, and we come down to the VT station, and the event was planned on 26/11. 26/11 is a very sad day for the history of India. We had a massive terrorist attack, and nearly more than 300 people died there. Okay, so उनको पुलिस को and the martyrs को हमको, we had to remember them, and in their remembrance we organized the camp over there. बहुत सक्सेसफुल रहा.
and we had nearly about 124 bottles collected over there. We could have done much more had there been more time and there been this thing. That was the blood banks which came in to help us in that time was the KEM hospital, one of the biggest hospital of Bombay. KEM hospital की पूरी टीम वहाँ मौजूद थी and समाज के कई सदस्य वहाँ मौजूद थे, समाज के बहुत सारे युवा वहाँ मौजूद थे and especially Shashi Sharma did a magnificent job of promoting the Jeet Samaj as well on the platform. Before that, blood bank was the donation drive was organized during the Jeet Jayanti. So वहाँ पर भी we did collected nearly around 65 bottles of blood. We tried to do this in COVID times के समय भी हमने COVID time के समय भी किया था. समस्या ये आ गई थी कि ब्लड बैंक was always asking for a minimum commitment कि हमें कम से कम 50 बॉटल या 60 बॉटल की कलेक्शन होनी चाहिए for us to bring all the जो भी चाहिए उस काम के लिए, beds and the manpower and all that. So during the lockdown period, when there is a panic in the market and during a massive shortage of blood again in the blood bank, ये दोनों चीज की deadly combination इतना खतरनाक हो गया था, we were not finding donors and the blood banks were not ready to come. तो हमने कैसे तैसे करके एक को बनाया, बातचीत करी थी and we told them that there is no commitment. If you wish, you can come and we can give you. करीब my target was to get around about 25 bottles for them. Unfortunately, the same day when we planned that, जिस building में हमने plan किया था, after we entered that building premises and all that, by the time the blood bank people came there, the building was sealed because there was number of people. तो वो लोग को वहाँ पर blood bank वालों को society वालों ने entrance के लिए मना कर दिया. So that particular opportunity went out. Otherwise, ये जो blood की जो समस्या आ रही है, even for routine purposes, routine surgeries, routine cases के लिए जो blood चाहिए doctors, वहाँ पे bank की shortage हो रही है. So the blood banks, blood is, as you know, a very important thing for the medical field, and whenever we get the next opportunity, the समाज फिर उसे आयोजन करने की कोशिश करते. Thanks, Kamlesh. So means we all know that we are running through a very bad phase, and it's all. I think this again tragedy is also a man-made tragedy, and rightly or wrongly, means it's a man, means it's a human, it's a means we all are somehow responsible for the kind of situation wherein we are. So Kamlesh ji, to you, means what guidance or what kind of means advice do you want to give to all of us to avoid this COVID situation? Wherein one should not get infected, whosoever is there as of now, means we all remain safe. So what kind of advice, what kind of instructions, I'll say, that you want to give to all of us so that we all are safe and in our home? ऐसा है सर कि in this particular situation मैं आपको बताऊं, एक मानवता की एक मानसिकता, when people feel मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सब लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, and that particular when suddenly that thing strikes on you, there's a blackout. क्या करना है? What are we supposed to do? And we always are in the denial mode. ये मेरे साथ नहीं होगा. Oh, ये ठीक है यार. This is a simple बुखार है. Simple मुंह में छाले आ रहे हैं. कोई बात नहीं. And we will try to take over-the-counter medicines and try to rectify yourself. Today the situation has changed. If there is any doubt in the mind that you are not feeling well, please connect with your doctor immediately. Please connect with your doctor immediately, बिना किसी संकोच करके, बिना किसी हिचकिचाहट से. जितना जल्दी आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, आपको उस समस्या का समाधान मिल जाएगा. जितना देर करेंगे, समस्या उतनी बढ़ती जाती है. Okay, the first and foremost thing is that अगर ऐसी कोई समस्या आती भी है आपको, rather आने के पहले, what I would suggest is that if people at home are careful about wearing a double mask,
एक सर्जिकल मास्क, उसके ऊपर नॉर्मल एक जो क्लॉथ का फैब्रिक का मास्क आता है, वो आप उसको डबल मास्क करके अच्छे से यू tied on your face, ensure to it that there is no leakage of air around your mask. Plus, you are having your nutritious food and equipped with all vitamins, vitamin C, vitamin D, and of course vitamin B complex. ये बहुत जरूरी है. And more than that, your diet should be quite nutritious. आपका डाइट में कहीं पर भी आप किसी प्रकार की ऐसी कुछ चीज न लें जिससे आपको मौसम के अनुकूल ही होनी चाहिए. अनुकूल के, आई मीन इट शुड नॉट बी अपोजिट दिस थिंग, यू नो. कोशिश करें that you avoid falling sick in the first place. कोशिश यही करें. उसके बाद अगर फिर भी खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो भी जाता है, first thing is get yourself isolated and speak to the doctor. That is the most important. Rajesh ji, you would like to add something on that? जो कमलेश जी आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा. आपको जैसे लगता है कि आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, आपको जैसे लगता है कि आपको बुखार आ रही है, आपको जैसे लगता है कि आपको हेडेक हो रहा है, आप समझ लो ना आपको एक कोविड हो गया है, आप अपने आप को आइसोलेट कर लो घर में. आप अगर कर लेते हो वो, तो आप परिवार के 4 लोगों को बचा सकते हो. वो काम आप अगर 2 दिन बाद करते हो, तब तक अपने घर में आपको संभालने वाले जो 3 लोग हैं वो भी नहीं रहते हैं, वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं. तो ये बहुत जरूरी है कि हम कितने फास्ट रिएक्ट करते हैं, कितनी फास्ट एक्ट करते हैं, वो अपने को उतना बचा लेता है. 2 दिन में तो ये कोविड ऐसा है कि 2 दिन में ये अपना क्या डैमेज करेगा अपने को खुद को नहीं मालूम. तो अपना डिसीजन बहुत फास्ट होना चाहिए. आप विटामिन सी लीजिए. विटामिन सी का एक नेचर है, डॉक्टर्स जो हम लोग बातचीत करते हैं तो मालूम पड़ता है, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हो. आपने विटामिन सी ली, आप अगर आपने यूरिन किया वो निकल जाता है. तो विटामिन सी आपको लेते रहो. इस बीमारी में आपको जिंक चाहिए. जिंक कहाँ मिलेगा? दूध में मिलेगा. तो आप 2 लीटर दूध एक साथ मत पी लो. आप एक एक कप दूध करके पीजिए, तो उसमें आपको जिंक मिलेगा. कुछ लोग अंडे खाते हैं तो उसको अंडे में जिंक मिलेगा. आप मल्टीविटामिन अगर खाते हैं तो जिंक वाली मल्टीविटामिन खाइए. तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है इस कोविड को फाइट देने के लिए. तो बिना जिंक के आप उसको फाइट नहीं दे सकते हो. घबराने की कहीं जरूरत नहीं है. आप बहुत लोगों के पास क्या होता है, अभी भी घर में ऑक्सीमीटर नहीं होगा, वो जब बीमार होंगे तो खरीदेंगे. तो मेरी उनको एडवाइस है आप ऑक्सीमीटर पहले खरीद लीजिए. जब मतलब अपने घर में कुछ बीत जाए या अपने में बीत जाए फिर अपन वो खरीदेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है. आप खरीद लीजिए. लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है, मेरी उनको एडवाइस है आप जरूर कोविड इंश्योरेंस एटलीस्ट करवा लीजिए. हमने दादी समाज के तरफ से लास्ट ईयर एक कोशिश करी थी. मैं बड़े दुख से बोलूंगा, एक आदमी समाज से हमारे पास कोविड इंश्योरेंस लेने आया. इतने बड़े समाज से हमने 100 लोगों की प्लानिंग करी थी. तो कोविड इंश्योरेंस करवा लीजिए. एक हॉस्पिटल में कोई आदमी एडमिट होता है तो उसका 3 से 4 लाख रुपए का मिनिमम बिल ये लोग बना रहे हैं. तो वो इंश्योरेंस अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत जरूरी है. उसकी 1 साल की वैलिडिटी है. ये छोटी मोटी चीजें करके अपने आप को फाइनेंशियली भी बचाइए और शरीर को बीमार होने से भी बचाइए. ये सब चीज अपने को करनी चाहिए. मेरा इतना एडिशन है इसमें कमलेश. So, मतलब आप we have heard both of you, and both of you want to say that people should be prepared for it. It should not be taken as if a surprise has come. So, मान के चलें कि अगर होगा तो what exactly is required to be done? They should be very much prepared for it. Like जैसे कि एम्बुलेंस का नंबर अपने पास में readily available होना चाहिए. Which hospital, which doctor? थोड़ा सा मतलब कमलेश, you would like to say something on that? Yeah, उसमें Rajesh. और मैं ऐड करना चाहता हूँ. आप जिस एरिया में रहते हैं एटलीस्ट अपने फोन में वहां के वार्ड ऑफिसर का नंबर सेव कर लीजिए. वहां के 1-2 एम्बुलेंस वालों का ड्राइवर का नंबर सेव कर लीजिए. कब काम पड़ जाए पता नहीं है. इतना काम अपने को करना चाहिए. हो सके तो वहां के जो मेडिकल स्टोर वाले के मोस्ट ऑफ नंबर होते हैं, और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो ऑनलाइन आपको देते हैं. व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें आती है, अपन उसको अवॉइड करके निकल जाते हैं. वो सब 4-5 जो चीजें आपको रखनी चाहिए. टेस्ट कौन सा लैब करता है, उसका नंबर क्या है, लोगों को पता नहीं होता है, बेचारे परेशान हो जाते हैं. फिर किसी को फोन करते हैं और मदद लेट पहुंचती है, तब तक बीमारी बढ़ जाती है. ये 3-4 चीजें करनी चाहिए. वहां के बीएमसी का वार्ड ऑफिसर का नंबर, अगल बगल में जो 2-3 हॉस्पिटल हैं उनके नंबर, एम्बुलेंस वालों के नंबर, इन सब के नंबर अपने पास अपने घर में रखना चाहिए जिसका सबको पता हो. Okay. So,
Next, just want to check, Kamlesh ji, like people are wearing masks, wearing gloves and all these things, and then these are being thrown like without looking into it, that how means from the infected people also as well as uninfected people. So what is your advice on people that how to treat this biomedical waste and how to be disposed of? Can you please guide us on this also? The biomedical waste, which is, are you able to hear me? There's a lot of disturbance here somewhere. Yeah, now it's good, I guess. मैं ये कह रहा था कि the biomedical waste, From someone's PC, there is a voice is coming up. सुरेश जी आपके यहाँ 2 फोन चालू है क्या? Kindly, अदल बदल है, ऐसा kindly नहीं हो mute every people when you are not speaking. हाँ जी, मैं Yeah, it's great now. तो होता है कहने का मेरा मतलब ये था कि whatever this, just in case ये assume करिए कि यहाँ पर अपने घर में कोई infected person है who has been identified as COVID positive, तो सरकारों की तरफ से ये इंतजाम ये किए गए हैं कि उनके लिए एक सेपरेट गार्बेज बैग का प्रोविजन किया जाता है, which is a colored garbage bag. Ideally it is yellow color, which is a biohazard. वो उनको बैग दिया जाता है and they come daily. वो रोज आते हैं हमारे घर और हमारे घर दरवाजे के बाहर खड़े होकर झोला खोल के रखते हैं. We are supposed to drop that into that particular thing. कोई घर के बाहर नहीं आता for the period of minimum 14 days. Those who are not infected and those who are infected for the minimum period of 17 days after the test date. And sometimes it is also the test date report. So this is the period which you have to stay home. आपका कोई भी garbage will not go out of home to anybody else except the official collector of this kind of infected waste material. ये वेस्ट मटेरियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या वहां के अधिकारी लोग उसे ले जाते हैं और उसको इंसिनरेट करते हैं, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे इसको बर्न आउट करते हैं. दैट्स व्हाट दे डू. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली. एंड जिस पर्सन को आइसोलेट किया गया है उसको वहां पे उसके कमरे में से कोई भी बर्तन बाहर ना आए और आप उसके बर्तनों को, उसकी चीजों को छुए ना. वो अपने ही कपड़े धोएगा, सब कुछ अपने हिसाब से अपने कमरे में करेगा. That is the best way to prevent infection in the other family members. Virender ji. Great. Thanks, Kamlesh ji. So Rajesh ji, means we have got a very talented youth among our Dadij society. समाज के अंदर बहुत अच्छे मतलब young बच्चे हैं. So during this situation, what advice do you want to give them that they should come forward to help each other and then form a community health center or help center, something like that? What is your opinion on that? How do they should come up and आपका मतलब what is your opinion on this, राजेश जी? मैं इसमें दादीज समाज के जो यूथ हैं जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं सारे टैलेंटेड हैं और सारे मेहनती हैं और अपना समय समाज के कार्यक्रम में देते हैं. कुछ यूथ हैं जो अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं. मेरा उनसे आह्वान है, थोड़ा सा बाहर निकलिए, समाज को कुछ दीजिए. समाज रिटर्न देता है. अगर मैं समाज से नहीं जुड़ता तो मुझे देवेश जी भाई साहब नहीं मिलते, आज आपसे मुलाकात नहीं होती, कमलेश जी नहीं मिलते और जितने लोग आज 67 लोग जुड़े हुए हैं वो नहीं मिलते थे. तो समाज बिल्कुल देता है, उनको आगे आना चाहिए. और इन विषम परिस्थितियों में आपको ये पता चलता है कि लोग किन किन परेशानियों से गुजर रहे हैं. ये परेशानियां अपने को जूझने की ताकत देती है और वहीं से मदद करने का जज्बा पैदा होता है. ये मेरा ऐसा मानना है. जब तक हम खुद फ्रंट पे नहीं निकलेंगे और लोगों से नहीं मिलेंगे, लोगों के तकलीफ और दुखों को नहीं समझेंगे, तब तक अपने को पता नहीं चलेगा कि दुनिया में कितनी तकलीफें हैं. आज के दौर में आदमी हर चीज से सक्षम है, उसके पास पैसे हैं, उसकी अप्रोच है, उसकी पहुंच है, पर वो मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकता है. उसको एक हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है साहब. वो गिड़गिड़ाते देखा है, उसको हाथ जोड़ते देखा है, उसका कॉन्टेक्ट एमएलए से है, एमपी से है, मिनिस्टर से है,
पर उसको बेड नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। रोज हम न्यूज पे तो देख रहे हैं, हम तो प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। मेरे जानकार अंकल हैं, वो बीमार हो गए थे, वेबिनार में जुड़े हुए हैं। उनके लिए मुझे रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए था। मुझे मालूम है कि कितनी मेहनत करनी पड़ी तब जाके कुछ इंजेक्शन अरेंज कर पाए, जिसमें लोकल एमएलए से मेरे पर्सनल रिलेशन इतने अच्छे हैं, लोकल एमपी से मेरे पर्सनल रिलेशन इतने अच्छे हैं, फिर भी फिर भी मेरी मजबूरी कि मैं उनके लिए 6 के 6 इंजेक्शन अरेंज नहीं कर पाया। प्लाज्मा चाहिए लोगों को, प्लाज्मा अरेंज नहीं होता है, उसके लिए अपन लेके जाते हैं, कभी रिजेक्ट हो जाता है, कभी कुछ होता है। तो चैलेंजेस बहुत है साहब, हर आदमी जो इस बीमारी में जूझ रहा है उसके लिए बहुत चैलेंजेस। तो यूथ को आगे आना चाहिए। यूथ मिरेकल कर सकता है, अपने आप को बचा के, अपने आप को संभाल के। ये टाइम है जन सेवा करने का, और हम दादीच हैं, हमने तो सेवा ही की है। तो आगे आना चाहिए अपनी कम्युनिटी के लिए, तो एटलीस्ट बाहर निकलिए, ये मौका है, जुड़ें और कुछ समाज को दें, ऐसी मेरा मानना है। So Kamlesh ji, your thoughts on this issue? Kamlesh ji, you are on mute. Unmuted. Yes. Tell me. आप कुछ कह रहे थे? कमलेश जी, आपकी आवाज इको हो रही है, शायद दूसरा डिवाइस आपके बगल में चालू है मेरे ख्याल से, उसको म्यूट करिए। Are you able to hear me now? यस। Yeah. It's good. Yeah, tell me, boss. What is the question? So how do you want that youth to come forward and contribute to their energy and their their efforts to the society? जो कुछ भी काम अभी हम यहाँ कर रहे हैं is possible only because of the participation of the people of the समाज। जो कुछ भी कार्य अभी तक हुए हैं, especially the youth people, okay, and जैसे जैसे हम जो भी नए नए प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, we will be definitely ensuring that the people are called here and they are ready to willingly give us their time and their energy to, of course, financially if they can help, more than welcome, no doubt. Lekin the most important thing which we are falling short is the time and their ideas which we require from the youth to come into the samaj. So the message to youth over here means who are participating in this forum and means who are not participating in this forum but are known to the people who are participating in this forum. I think we should give the message to these youth that they should come forward, help Kamlesh ji, Rajesh ji in giving new ideas, because as of now these are the real resource of energy, and these are the real truly speaking these are the people who can really do wonders in our, not only in our Dadi Samaj, but especially to means they can help everyone. So means all of us should encourage these youth to come forward and help. And the platform over here, like Kamlesh ji and Rajesh ji are here, so they can contact them, and we can move forward from here in helping this COVID situation. Not only the COVID situation, but also otherwise also means we need to develop our society, Dadi Samaj, which is really a means a moment of pride. Like Devesh ji, he has developed such a big forum. So let's help each other and strengthen this forum so that we can take it to a next level, wherein we can really develop our society. So now the next point is that Rajesh. मैं साहब Yeah, इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। yeah, please. मैं यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 67 लोग जुड़े हुए हैं दादी समाज से। ये मैं आपको भी समझना है और इसको आगे लोगों को भेजना है। मेरे देवेश भाई साहब से भी इस बारे में काफी बात होती है। आज हम हमारे घर में टेलीविजन देख के बहुत प्राउड फील करते हैं कि पंजाबी कम्युनिटी ऑक्सीजन लंगर चला रही है, हमको प्राउड फील होता है। महेश्वरी कम्युनिटी अपने कम्युनिटी को खाना पहुंचा रही है, अग्रवाल कम्युनिटी अपने कम्युनिटी के लिए ऐसा कर रही है, जैन कम्युनिटी कोविड सेंटर बना रही है 100 बेड का। वो क्यों बना पा रहे हैं, अपने को सोचना चाहिए। क्योंकि उनकी कम्युनिटी अपने कम्युनिटी को
कुछ देती है और कम्युनिटी को फाइनेंशियली स्ट्रांग करती है। उनके पास ऐसे लोग हैं जो पैसे खर्च कर सकते हैं और उनके समाज में इतना फंड है कि वो कोई भी चैरिटी इवेंट कर लेते हैं। हम दाधिच समाज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रोजेक्ट्स तो बहुत है, पर फाइनेंशियली आप किसी प्रोजेक्ट को करने जब आगे जाते हो तो थोड़ी आगे बढ़ के आप रुक जाते हो, आपकी एक लिमिटेशन आ जाती है। आप सपोज करिए दाधिच समाज के 1000 परिवार बम्बई में रहते हैं, एक परिवार में 4 लोग हैं, टोटल 4000 लोग हो गए। 4000 लोगों को अपने को फ्री वैक्सीन लगानी है साहब। 1000 रुपए 500 रुपए एक आदमी पे लग गया, तो 2-2.5 लाख इतने रुपए अपने को डालने हैं। समाज अगर वो एक्टिविटी करेगा, कब करेगा? जब समाज सक्षम होगा। तो मेरी अपील है, आप साल में एक बार अपने घर से 5000 रुपए दीजिए समाज को। मेरा बर्थडे है, मैं समाज को मेरे बर्थडे पे 11,000 रुपए दूंगा। किसी भी तरीके से आप समाज को डोनेशन दीजिए या पैसा दीजिए, एटीजी का सर्टिफिकेट लीजिए, अपने आईटीआर में दिखाइए, उसका बेनिफिट ले लीजिए। समाज जब फाइनेंशियली मजबूत होगा तो काफी एक्टिविटी ऐसी कर सकता है जो समाज के फायदे में होगी। अभी मैं मतलब दादी समाज मुंबई की कार्यकारिणी और हम लोग मिलकर प्लान कर रहे हैं कि दादी समाज के जितने भी लोग हैं उनके लिए अभी सबसे बड़ी समस्या है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की। किसी को दिक्कत हो गई तो मिलता नहीं है साहब। 1.25 लाख 1.5 लाख में नहीं मिल रहा है, 16,000 रुपये भाड़े में नहीं मिल रहा है, रोज का 1000 रुपये भाड़े में नहीं मिल रहा है। तो बहुत बड़ी समस्या है। कमलेश जी, बातचीत चल रही है, हम वो 2-3 समाज के लिए परचेज करने वाले हैं। समाज को कुछ जरूरत पड़े तो हम उनको दे सके, इस तरह की एक्टिविटी हम करना चाह रहे हैं। तो करने के लिए समाज के पास फंड होना चाहिए। डीआईटीएफ को भी अगर कुछ करना है तो उसके पास भी फंड होना चाहिए। तो समाज में जो सक्षम लोग हैं, जो किसी भी तरीके से समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो उनको आगे आके देना चाहिए अपने समाज को मजबूत करने के लिए। ये मेरी अपील है, सबसे निवेदन है मेरा। गुड। So next question इसी से related, मतलब मैं आपको पूछना चाहूंगा राजेश जी, that this vaccination drive is now open to means youngsters 18 years of age as well. So हम लोगों का कोई, although there is no policy, but हम लोगों का दादी समाज की तरफ से कोई प्लान है इसको आगे बढ़ने का, बढ़ाने का? कैसे करेंगे हम लोग? इसमें बातचीत चल रही है भाई साहब। इसमें ऐसा है कि अभी तक गाइडलाइन बहुत क्लियर नहीं आई है। सरकारी गाइडलाइन तो ऐसी है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और वो आपको आपके नियर बाई सेंटर सजेस्ट करेंगे, आपको वहां जाके लेना है। तो ये अभी तक क्लियरिटी नहीं आई है कि अपन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना स्टॉल बुक कर सकते हैं क्या, अपना काउंटर बुक कर सकते हैं क्या। तो ये एक चीज ऐसा है, इसके लिए हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जैसे भी डिसीजन हो जाएगा कि हम किसी हॉस्पिटल में काउंटर बुक कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए ये काम कर सकते हैं, कि अभी ये काम सरकार ने, ये मतलब इस तरह की एक्टिविटी सरकार ने रोक लगाई हुई है, कम्युनिटी बेस्ड नहीं की हुई है। तो वो क्लियरिटी आने के बाद में उसमें बिल्कुल डिसीजन लेंगे। जी भाई साहब। वीरेंद्र जी, Yeah, sorry, I was on mute. So means like this pandemic has also thrown a very big challenge, because everyone is having means their businesses are either means stopped, or it has given a means taken a big toll on the economy and working conditions. So how do you think people should overcome? Kamlesh ji, can you guide us? Means just like लोग, किसी का बिजनेस बंद है, दुकान बंद है, प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रेस में आ रहे हैं, एंजाइटी है लोगों को. हाउ डू यू थिंक दैट पीपल शुड ओवरकम this stress? Because it again is it means, truly speaking, it is again becoming a very means kind of a stigma kind of thing, that जिसको कोविड हो गया वो ये समझता है जैसे वो कलंकित एक टाइप का हो गया है, ऐसा लगता है लोगों को. So how to overcome all these things? So Kamlesh ji, can you guide us? basically what I feel sir is this particular period, जैसे कल हमारे राजेश जी चेयरमैन साहब भी कह रहे थे, ये समय इतना विकट समय आ गया है, ये कमाई का समय नहीं है, ये जान बचाने का समय है. This is the primary motto everybody should have it very clearly in our mind. Making money out of this thing is a secondary part. The first and most important part is that we should understand कि यहाँ पर जो एक स्ट्रेस सिंड्रोम आता है, rather
लोगों को टेंशन आ जाता है। कई बार मुझे जैसे फोन आते हैं कि कमलेश जी जान खतरे में है, मुझे इंजेक्शन रेमडेसिविर का बंदोबस्त करके दीजिए, तो सामने वाला तो टेंशन में है ही, मैं भी आ जाता हूँ। तो इसको कैसे मदद कर सकता हूँ, so how that happens, but the fact is very simple, apart from all that, कि ये जो समय अपने को भी मिला है, here is this is one thing we should understand very clearly, ये कमाई जो है अपने संबंधों की कमाई इज अ रियल कमाई, पैसों की कमाई इज नॉट अ रियल कमाई। अपनी रियल पूंजी जो है वो अपने संबंध है, उनको बचा के रखना है। वी शुड गेट इन टच विद ऑल दीज पीपल, संबंध, अपने संबंधों से, अपने इष्ट मित्रों से, सबके साथ में हमें इस वक्त कांटेक्ट रखना है। हम उनसे 2 बार बात कर लेंगे, उनसे 1 बार बात कर लेंगे, उनसे पूछ लेंगे आपकी तबीयत कैसी क्या है, रियली सीरियसली इट, वो शांति उसको थोड़ी सी महसूस होती है कि मैं अकेला नहीं। टुडे द लॉकडाउन की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि वी आर ऑल अलोन, बट टुडे व्हाट हमें जो जरूरत है, वी शुड कनेक्ट विद एवरीबॉडी। हमको सब लोगों को फोन करना चाहिए, ये पूछना है भैया आपने वैक्सीन लिया कि नहीं लिया, क्यों नहीं लिया भैया, पहले एक काम करो। ऐसे ऐसे अजीब अजीब मुझे एक्सपीरियंस आए हैं यहाँ पर, पीपल आर नॉट टेकिंग द वैक्सीन, बिलीव इट और फॉर ऑल काइंड ऑफ सिली रीजंस, सिली रीजन इन द सेंस कि भैया अगर हमारे बच्चे वैक्सीन ले लेंगे तो बच्चे नहीं होंगे उन That's true. कमाल That's कमाल। true. सही कह रहा हूँ मैं। So it becomes it is so important, to tell them कि भैया Kamlesh ji, it's in Mumbai or somewhere else? It's in Mumbai metro or somewhere else? very much in Rajasthan, sir. राजस्थान में हो सकता है। So ये एक बहुत ही मतलब you can say the negative जो न्यूज़ होती है ना, समाचार जो आते हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो होता है, दैट गेट्स अट्रैक्टेड टू आवर माइंड इंस्टेंटली, मोर इंस्टेंटली रादर देन द पॉजिटिव वन। अनफॉर्चुनेटली ये सही है कि हमें बहुत सारे जो अच्छे समाचार होते हैं ये जस्ट इस कान से निकलते हैं उसी कान से बाहर आ जाते हैं, बट द नेगेटिव गोज एंड टेक्स अ प्लेस इन आवर हेड। So that is where we have to find some way out, and tell them कि भैया please don't do that. ये है, and we should genuinely try to help them out अगर हम सक्षम हैं आर्थिक रूप से या लाइक काइंड ऑफ मेडिकल रिलीफ, जो कुछ भी कर सकते हैं हमें अवश्य करना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेस बस्टर नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ पर सामने वाले के लिए। अगर किसी के घर में कोई केस है, अगर आप उसे फोन करके उनकी स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं तो यकीन मानिए, मैं कह रहा हूं आपको, दे फील वेरी नाइस दैट समबडी हैड कॉल्ड एंड आस्क्ड देम। तो जरूर आप अपने संगठित रहिए, सभी को अपनी यथा उनके उनके हाल के बारे में पूछिए, कैसे हैं, क्या मदद क्या कर सकते हैं, जरूर करें। दिस व्हाट आई मैं तो इसमें एक चीज और बढ़ के बोलता हूँ। मैंने इन दिनों में ऐसे ऐसे केसेस देख लिए हैं, लोगों को 5 दिन का टाइम नहीं मिला सर, मैंने देखे मेरी आंखों से, 4 दिन का टाइम नहीं मिला। आपका परिवार में, दोस्तों में, मित्रों में कहीं भी मनमुटाव है, आप भुला के उसको एक बार बात कर लीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एक बार उसको सल्टा लीजिए फाइल को। पता नहीं ये कोरोना अपने को समय देगा कि नहीं देगा, आप इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा, पर ये मैंने एहसास किया हुआ है, मैंने देखा है इस चीज को जनरली, मतलब लोग 2-3 जगह पे ऐसा हो गया है, तो ऐसा कुछ है तो उसको कर लीजिए। अपनी कम्युनिटी में, अपने रिश्तेदारी में, अपने परिवार में कोई भी ऐसा बंदा है जिसको बेसिक्स जो जरूरत है और उसको आप मदद कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसको मदद अपने को करनी चाहिए, और वो बात उसके और अपने बीच में रहे, उसकी भी इज्जत है और अपनी भी इज्जत है, तो काफी अच्छा माहौल बनेगा। और अपन अपने लोगों के लिए करेंगे तो बचा के ये 2021 भी निकाल लेंगे, आगे वाला समय आने वाला बिल्कुल अपना ही है। So thank you, Rajesh ji, and thank you, Kamlesh ji. Now means we have got a very eminent surgeon from Pune, Dr. Subhash Dhadij. So he is also here. So sir, I hope you are listening to us. So would you like to give some kind of way forward to all of participants how to handle COVID situation medically as well as mentally, both ways? Sir, if you can hear us. Subhash ji. Oh, Yeah, thank you, sir, joining. Thank you very much for joining. Yeah.
Yeah, and Yeah, thank you. means Thank you for calling me and being part of it. এরকম বুঝলে খুব বেশি ওভার স্মার্ট হয়ে গেছে कुछ म्यूट कर दीजिए कुछ लोगों को. I think those who are not speaking, please mute themselves. H. Amit कोई है? Rashmi, please do the needful. Yeah, Subhaji, please continue. Hello. Yeah, I'm very happy to hear the discussion going on. And most important, I find that the attitude of the people towards this problem is very good. And medically speaking, I think the virus, as we all know, is spreading very fast now. And it has mutated itself to such an extent that it is infecting even infants. Previously, it used to infect only adults because, you know, the children don't have that kind of receptor in the body by which the virus can stick to it. But now it has mutated to such an extent that even without those receptors in the children's lung, it can attack them. So that's why we are having this problem. So basic thing is, first and foremost, is that we should avoid getting infected by the virus by a barrier method. What we are doing is a barrier method in which it cannot enter our body. How does it enter? It enters from the eyes, mouth, and nose. These are the common areas from which it can enter. Once it has a moist foothold, it starts multiplying. That's how it enters. So the face mask is one important thing. An entire area of the face is important. And it can get contact from the air. It is now known that it is airborne, not only droplet borne, but airborne. It can travel for long distance. So for that reason, we have to keep ourselves indoor as far as possible. If you have to go out for a particular reason, take the protection of the mask, and you have to sanitize your hands very frequently. Keep washing your hands with soap and water. And if it's possible to have a sanitizer which is alcohol based, that you should use. Because this virus, the cell wall is such that moment alcohol touches it or soap touches it, it dies. So this is a method of what is called a barrier method. Don't allow it to enter your body. Now, suppose by chance the virus has entered your body. If your immune system is strong, it cannot generally damage your body. For it to be able to damage your body, your immune system should feel weak, or the virus should go on multiplying to a particular load. So now it has been found that the main crucial factor for causing disease is the load of the virus. So if it causes more than 1,000 colonies per millimeter, then only it can cause infection. So the moment it gets a foothold in the nose, paranasal sinuses, mouth, that's before it can enter the body, you can do steam inhalation. So first is barrier. Second is, suppose it crosses the barrier, enters your mouth or nose, you do a steam inhalation. So with steam inhalation 3 times a day, you can kill the virus to a great extent. You cannot destroy the whole thing, but the load of the virus will come down. If the load comes down, the body will take care of the rest of it and can destroy the virus. Now, third thing you have to do is boost your immunity. Boosting your immunity requires a normal healthy food, which I heard that most of you are talking about it. Vitamins, multivitamins, vitamin C, vitamin D, and zinc is now found that it is very important. You have some kind of a zinc. And after that, a healthy food, good fresh vegetables which have been thoroughly washed. You get stuff from outside that has to be sanitized. The vegetables have to be washed with a particular solution, a dilute chlorine solution, or wash it under running water for 2 to 3 times, so that make sure that there is no virus. So also get packed food, or you get atta packets and all that. Atta packets and all that, again, you have to sanitize the packet before you get it into the house. But that's another way in which the virus enters our house, is to food packets or any other packet. Suppose cardboard package is a house, you spray it with alcohol spray. Now is available, aerosol spray, that will kill it. Or you leave it in the sunlight for 2 to 3 days. The virus cannot survive on cardboard for more than 2 to 3 days. So all packets, if not important, leave them unopened for 2 to 3 days. If important food packets are there, you sanitize them. If a plastic packing is there, wash it with light soap and water. That's where you reduce the load of the virus coming into your house. So next, the source comes after the food. It comes is medicines. Now medicines, everybody is talking about remdesivir and all that. Now science has said that it has really no great role in preventing mortality and morbidity in this COVID infection. It's a very costly drug, which is benefiting some drug company actually more than anybody else. So my opinion is, don't go for remdesivir, don't run after it. It's not very useful. The thing it does
it reduces the stay in the ICU. To give it cost about 1.8 lakhs, but it reduces the stay in ICU from 5 days to 2 days or 3 days. So that's the only advantage it does. So now suppose there is a person who has got infected with COVID and RT-PCR is positive, he should do. First is isolation, second is stimulation, third is good food, and fourth is the vitamins. After this is done, what are the drugs he should take? There is one drug called ivermectin. This is 12 milligram tablet twice in a week is supposed to be still found to be good because studies are still going on, but still recommended in the medical profession to give ivermectin 2 times a day, vitamin C twice a day, zinc twice a day. Then we go to antibiotics. There is no great role for antibiotic. If there is a fever, then we are recommending doxycycline or azithromycin twice in a day for 5 days. You monitor the patient with this, and everybody has to have a pulse oximeter in the house. Keep recording the pulse oximeter and maintain a record. Take a notebook, write a record of temperature 3 times a day, pulse oximeter reading 3 times. If the pulse oximeter reading is above 95, no problem. Between 90 to 95, you have to be cautious. Moment it falls below 90, you should be careful. You need some oxygen now to support your lungs. Again, this can be done at home if you have an oxygen concentrator or a cylinder. Majority try to avoid going to hospitals because hospitals are the cause of most of the problems because there is a very large load of virus in the hospitals. Unless it is really necessary, should not go to a hospital. Get in touch with doctor. I am doing teleconsultation to a lot of people, and touch wood, many of them, 90% of them are avoiding hospitalization if they contact in the first 1 week with these drugs. So with these simple drugs and with these simple measures, isolation and the other techniques of barrier nursing, we can reduce the load. Now comes that the patient is very sick, is really sick. Then what we do is, even at home, I'm ordering the 2 or 3 tests, a special test which we do. So one is CBC, which everybody does. In CBC, there's a ratio between the leukocytes to lymphocytes. You know, this a little technical, but that ratio will tell me whether the patient is going downhill or uphill. Another thing is serum ferritin level. Serum ferritin level is serum iron level. If the ferritin level is increasing, it goes beyond a particular limit, then I know this patient is going to be in trouble and he needs some further treatment. The third thing is serum D-dimer level. This shows that blood is getting clotted. If D-dimer level is high, above 500 to 1000, then he needs a blood thinner. So if these 2 tests are positive, I will start this patient on a steroid. Now, steroid is a very important drug. First 1 week, you should not give it. Let the body fight and develop immunity. The second week, if you give it, it can make a difference between life and death. Remdesivir is not useful. It has been proved. Even the US FDA has said, and UK all have said that remdesivir is a costly medicine and not useful. If you give steroid in the second week before the patient goes downhill, believe me, you can save his life. I have been giving it from last several days, and several patients are recovering. Last year also we did it. So give steroid, and then because the blood is clotting, the patient dies. The lung infection is because the blood leaks in the lung capillaries and clots, and he cannot breathe, and he dies because of that. So to prevent that, we give a blood thinner. It prevents clotting of the blood. Many people, heart patients who are having stents, they will be having it. So we give drug, heparin in some form. Nowadays we have heparin injections and also the tablet called Apaxi-Ban tablet, 2.5 milligrams. You take it twice a day. So if patient is sick, oxygen concentration falling below 90, and if he's in the second week, I start him on 2 drugs. These 2 drugs are game changers. They can change the life of the person. One is a steroid, and another is Apaxi-Ban. Believe me, so many lives have been saved. So many people are prevented from going to hospital. That way, the real sick patients who go to 3rd week and they're not getting control of these drugs, then they have to get admitted and get into ICU. So with this simple treatment, it's a simple, very simple, logical treatment. Only the people at home should understand. I make them make a record. Chart में drug का time लिखिए and tick मारिए, given or not, because somebody will forget. There should be one person responsible for driving. This is nursing care. Nursing care you're doing at home. I'd like to stop. If any questions are there, I'm glad to take it.
Thank you Thank so you much. very much. Thank you very much, Dr. Saab, Dr. Subhash. It's a very wonderful insight and I very have the question. important insight एक that you second. have given to us. We are really very thankful to you and for joining us. Truly speaking, all of us, means all participants, from the core of our heart, thank you for giving us this wonderful insight and practical insight about this deadly disease. And Yes. it's a great relief to all of us that it's not that deadly that as we are thinking, and then we are running around for remdesivir and all these medicines. Whether it, Yes. in case we follow simple rules and regulations, we will be able to overcome it without any problem. So many thanks to you. So now I think we have done, Rajesh ji, Kamlesh ji, I think we have completed our set of discussion. I think we can, Devesh ji, if you think it fit, we can leave the forum open for question answers. And since we have a very eminent surgeon, Dr. Subhash ji online, so we can take it up. Over to you. Sure, Dev. sure. Yeah, sure. Krishna, A you lot can of do it. appreciation has been received for Subhash ji. A lot of people are Dr. saying Subhash ji for Krish. sharing the insight. Krish, your voice is cracking. Yes, I'm there, sir. I'm there. Now it's good, sir. Yeah, yes. Yes. A lot of appreciation has been received for to Subhashji Dadich in our chat box. People are very thankful to you, sir. You have shared a lot of insights, a lot of precautions, and a lot of things which can be very helpful for a person to consider in the situation of COVID and while they are feeling some symptoms and everything. So thank you so much, sir. Thank you for your insights. Anyone in the team, if have any questions, please raise your hand or write in the comment box so that we can at least resolve your queries. Whenever you can write on the comment box, or you may just raise your hand so that we can help you out. Mr. Sushil Dadich has raised their hand. Dr. Subhash, thank you very much. Wonderful session. It was very knowledgeable. Now I have two queries very quickly because a lot of people. Your voice is breaking. Can you hear me, sir? Now? Yeah, sure. Your voice Yes, is we can hear breaking. you. We can hear you now. Yeah. Okay. So I have two queries. I wanted to know about a lot of the medicines doctor has suggested just now. So can you please give the brief onto the FeviFlu also? Because FeviFlu, a lot of doctors are speaking, and a lot of people are searching the FeviFlu, which is into scarcity currently. My second question is that you had told about the oxygen level, doctor. But in one or two cases, what I have noticed, even the oxygen level was 94, 95. Then also that patient got deteriorated and got admitted into the hospital. Please. Yeah, see, first of all, flavipivir, it's an antiviral drug. It is not specific to COVID virus. It can kill some viruses, it cannot kill some. So because of want of anything else, they just started this, especially those who have these nose symptoms, nasal leaking and sneezing and all that. For them, we are starting. But the value of it is not proven medically unless we do research and prove it and double-blind study. We cannot say it is good or bad. But it is one of the drugs in the armamentarium which people are using, and that is being tried, but we cannot say for sure that it will work or not. And regarding the second question that you said that 94% deteriorated, see, that is one of the parameters is this. Now, the person who already has bad lungs, who has had asthma or allergy, or somebody who has TB of the lungs, and with 94 also you can go down. Somebody has a heart problem. See, the clotting occurs not only in the lungs. Basic what happens is the disease is what the virus goes into the body, creates a problem and creates a storm. The storm causes a lot of cells to be produced and certain chemicals we call cytokines. There's a cytokine storm created. The patient doesn't die by the virus. He dies because the virus goes and hits certain targets and they start leaking tons and tons of fluid, and then it causes clotting of the blood. So clotting can occur in the kidney, it can occur in the heart. Suppose the person already has a stent in the heart. So the virus has not destroyed the lung. So his oxygen saturation is still 94. But the stent in the heart got blocked. So he'll die because of that. So also it can go and affect the kidneys.
wherever there's a blood circulation, there it can cause clots. So basically, clotting mechanism is what kills the patient, and it is not the virus as such. So oxygen sachet, generally what happens is it can, the lung also. If we take the heart, it also check other visual test that, and then we can take timely action. But as a general rule, 94 patient, if we can continue monitoring at home with the drugs, most likely he'll be okay. But what you say is right, it's possible. Then in that case, it is a case which you have to take it on a case by case basis. Thank you very much, doctor. Thank you very much. Yeah. Welcome. I hope, Sushilji, your queries has been resolved. There is a second hand been raised by Mr. Pawan Kumar Asoka. Yes, sir, you can ask your queries to our speakers or either Mr. Subhash Dhadich. हेलो Hello, yeah. हाँ सर, मैं अभी सुन रहा हूँ, खाली मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है. Okay. Sure, sure. Doctor, there is one query. Can I raise one query, Krish, with your permission? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So, Doctor, Definitely, sir. just one clarification I just wanted to have. With this CT scan, one patient had a score of 7 out of 25. The other patient had a score of 9 out of 25. The 7 out of 25 patient had some flu in his lungs, and he got admitted. Rather, 9 out of 25, she didn't get admitted. So, is there any play around this we need to understand about it? Can you please throw some light on it? See, the CT score is now well documented. 25 is the maximum. The higher the CT score, the back 7 and 10 score generally they don't require admission. But what happened is maybe the person got personally by out of choice she got admitted, or out of panic they got admitted, or the doctor felt that the other comorbid conditions to admit. That's not a criteria. 7 got admitted and why he 25 didn't get admitted, we don't know, because the criteria is only guiding us towards the thing, disease, severity of disease. And CT scan also, everybody doing CT scan is not a good thing if you ask me personally. And even medically, there's a lot of opposition to it. First thing is, you know, the CT scans, they're doing about 70, 80 scans in one room in a day. So that is a big load of virus entering. They say they fumigate and sterilize it, but now it is found that they are one of super spreaders. The CT scan rooms doing CT scan for no reason at all. Has a mild flu and one more. So he's exposing himself to more and more infections. Second thing is exposing himself to radiation. Don't do unnecessary CT scan is my first advice. Second thing is, suppose the CT scan is showing a score of 7, congratulations to you. It's not bad. But suppose you have some other, you have a severe diabetes or a heart condition with a score of 7 or 12 also, then your doctor can take a decision with you. So admission criteria can be several. One of them is CT scan score. And one last question, Doctor, from my side. The post this COVID, when the patient has come out of COVID, like they have been administered a lot of FabiFlu, a lot of Remdesivir, and a lot of these steroids, etc. So, what is your suggestion to the patients? Means like the antidote of all these, because the body gets chemicalized too much because of this. So, what do they do to dilute it, and means what are the post-COVID precautions to be taken, and how to normalize the life after that, and what are the precautions you suggest to the people over there who have come out of COVID situation? Yes, post-COVID syndrome now is a very big issue, and we are going to be battling with this for several years. There are several people who had COVID and then they are on oxygen for like almost a year or two. And there are people who have so many difficulties in life, they develop diabetes, develop so many problems. So post-COVID, first and foremost thing is, you can cause a physical problem, and more than that, it causes a mental problem. So the stress factor, the post-traumatic stress disorder, which PTSD, which we call, that is one possibility.
About the chemicals causing side effect, every chemical, every drug has side effect. Even crocin has side effect, let me tell you. So what you say is right. With all this such strong antibiotics, antivirals and all that, there will be definitely side effects. But what is required, we have to do. I mean, if it is required, we have to do it. We can't help it. So we have done that. So best way to get out of this, go to a clean environment, have healthy home food, sorry, and sorry, supplementally with sorry to interrupt you. We missed your communication in between when you said that means body is highly intoxicated with these Your voice was chemicals. Then breaking, sir. yeah, at that time we missed you, sir. what You can what start is- from there. You can start from there. We missed your voice. You can start from there when you were saying that you are, in case the body is heavily intoxicated with chemicals, what one can do. You were saying something on that. Sorry. Yes, yes. So I was saying that every drug has side effects, and every chemical has side effects. So the body has a lot of power to overcome most of it. But since we are given such strong drugs, what we need is first of all clean environment at home, a good healthy food, and supplemental vitamins and minerals, and natural food, whatever is good. Give some time to body. It's a very test and a lung test, and we try to identify which organ got the major hit, and taking that in view, then we give specific drugs if required. But most of the time, let me tell you, body recovers on it. Give it about 3 to 4 weeks. The chemical effects of these drugs will go in 3 to 4 weeks, but the mental effects will last longer. That you have to be prepared. Another thing we have seen is some people develop diabetes and hypertension and lung disorders, which they didn't have before COVID. Those people, again, you have to follow up, try to find what is the cause of it. Steroids cause diabetes. Why is your voice a bit breaking, I guess? Diabetic takes steroid for long time, of diabetes also, hopefully. So it is done on case to case basis. Thank you, sir. Subhashji, there is one question for you. Mr. Ankur Dhadich has asked, can we take Ayurvedic medicine like Giloy while taking the vitamin C and multivitamins? See, actually, I don't know what the composition of that medicine in Ayurveda, but with vitamins, you can take anything. Vitamin will not interfere generally. Right. There is one gentleman, Mr. Niranjan Dhadich, who has asked if some brief written info can be possible as a precautionary measure, as a guide to refer. Yeah, that I've discussed with Devesh ji, and he has planned something. I think we can put it on the website or what. If he gives me the detail, I can give a write up and send it to him, or whatever you suggest, I can send, because I am sending to so many people here also a brief description about how to manage moment you suspect that you have COVID. That I can send. Talk to Devesh ji and we'll Sure. Mr. Rajesh P. Sharma has raised their hand. Sir, you can ask your question. Sir, my question is to Dr. Subhashji. Now we have few patients who have got one shot of the vaccine. Now the other shot is not available. So if there is a delay, so can we wait, or like even after 1 month, generally it is taken the second shot. But if the vaccine is not available, then can we wait, or what exactly is the consequences? Like we can have it after 2 months, 3 months, no effect, or again we have to take 2 injections. Actually, initially they said after 4 weeks you should take for Covishield. Second dose they said used to be out 4 weeks, but then after research they found that you delay it for about 8 weeks, it's better. 6 to 8 weeks and now for Covishield. Covaxin they say you can take after 4 weeks, but I think that if it is not available, what can we do? We have no choice but to wait. And generally up to 8 weeks, if you wait, it's not a problem. Even if you take the dose after, it will be better immunity after 8 weeks. And if you have taken the first dose, we'll have at least 50% protection. But let me tell you, basically the vaccine is not 100% pure.
what it does is, if I have taken 2 doses of vaccine, of course, I was lucky because they gave the health workers much earlier. So I will not get admitted to ICU. That level of disease will not come, and I should take supportive treatment early. So what it does, it prevents you from falling very badly sick, because the virus is very cunning. For its survival, it is changing its structure, what we call mutation. It's changing structure and attacking, but the immune has some memory about the vaccine which we gave. So because of this, now I will be protected. And if I take some minimum treatment and precaution, that's enough. So please take the vaccine even after 8 weeks or 10 weeks. It's Oh, right. better if you take, but it's not a can be hand, Right. So thanks a lot, sir. No, these were the fears which Yeah, I sure. had, so that is the reason I asked. Thank you, Yeah. Rajesh ji. Hope this clarifies your query. There Yes, is yes, an sir. appreciation received for our Dadit Samaj. Thank you so much to Dadit Samaj. Your fear I got a quick help from Kamlesh ji. Don't worry, it will be all. Yeah. So there is a quick appreciation received from Mr. Sushil Dadit. Thank you very much to Dadit Samaj. Got a quick help from Kamlesh ji for getting 1 oxygen concentrator yesterday, and yet team used for a critical patient in our society. Proud to be a member of Dadit Samaj. So 3 cheers for DITS. For this, we have saved 1 life. Yes, everyone. Anyone has any queries to our speakers, to Mr. Subhash Dadich, you are free to ask. You asking something? Yeah, I think Krish, Krish, complete. yeah, Go we are ahead, done. Krish. Abhi. Yeah, we're done. Krish. Yeah. So, so let's move towards vote of thanks. So I would request Mr. Vivek Dadich to take over. Mr. Vivek Dadich has its own business, Moonline Constructions in Vapi. So I would invite them, and please, Mr. Vivek Dadich, you can go for vote of thanks. And post that, we would like to run 1 video for everyone. So it will be a very inspirational and very humorous video. So I would request everyone to please hold for another 10 to 15 minutes. It will be worth watching it. Over to you, Vivek ji. Hi, hello all. I Vivek Dadich, एक ददीच समाज का कार्यकर्ता मुंबई से. This webinar was the need of the hour. जो हिसाब से अभी जो माहौल चल रहा है, ये वेबिनार का होना बहुत बहुत जरूरी था. And firstly, I would like to thank Mr. Devesh Dadich, my father, for giving me the opportunity to speak in this webinar. And secondly, Subhash ji Dadich, जो आए और इतना इंसाइटफुल नॉलेज सब जन को दे गए. कृष्णा मेरे भाई, for showing us the journey of DITF so far and so smoothly. वीरेंद्र जी शर्मा, जो आपने जितना इफेक्टिव से आपने जो मॉडरेशन किया है, इतने सारे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आपने इनसे पूछ लिए कि किसी के पास कुछ बता ही नहीं उनसे पूछने को. फाइनली आई वुड लाइक तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राजेश जी शर्मा और कमलेश चाचा का. चाचा एक्चुअली ये जगत चाचा ही है और इनको चाचा बनाने का भी श्रेय मुझे ही जाता है. और आज के जो स्पीकर्स है, they were so infectious and person with clear vision and mission and how to achieve them with the sheer dedication and teamwork. Where किधर मैं भी एक पार्ट था इनका, and I also get inspired from them. And thank you very much. एक तो ये ना बिल्कुल भी थैंक्सलेस जॉब करते हैं, कभी इनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, कोई थैंक यू नहीं बोलता है, बट पूरे समाज की तरफ से आज मैं थैंक यू बोलता हूँ. अपनों के लिए अपनों के लिए काम करने के लिए अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं होती है. बहुत बहुत धन्यवाद. अरे लेकिन मिल जाता है तो मजा तो आता है ना.
अपनों के लिए थैंक यू बोथ ऑफ के यू, बीच में थैंक यू। Yes, everyone, I am very thankful to everyone and Mr. Deveshji Dadich for giving or connecting us, all of us, for this webinar. And I would want to thank you all of participants who have raised questions. So let's complete this webinar on a very humorous note. So I would like you all to see a video which has come from RJ Naved. So it is very helpful and it is very enjoyable. So I would like to share my screen. Rashmi, can you make me host? Hello, Rashmi. Hello. Rashmi, Hi, can you hear me? Krishna. Yeah, I'm Yeah, trying to do, but not able to do. Can you please guide me how to do it? Yeah. Aditi is there by any chance? Rashmi, you press this leave button. Press leave button. Must be finding it in the the right hand corner. Leave button, and then there you will find. You can give it to somebody else. I think I have found it. Yeah. Yeah, I'm the host right now. Thank you so much, Rashmi. I'm just sharing my screen, everyone. I hope the screen is visible to all. Yes, Krish, you can start playing. The enjoyment begins. हेलो हेलो जी जी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने नंबर दिया था आपका और ये कहा था कि आप कुछ बात करना चाहते हैं डॉक्टर से। देखिए, आजकल जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए कई बार ऐसा लगता है कि कभी भी मर जाऊं। हाँ नहीं मैं रुके मैं समझ गया, कभी मर जाओ। सर मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, आप माइंड मत करिएगा। मुझे ये बताइए, अभी मेरी वाइफ ने मुझे मैसेज किया है तो मैं आपकी हेल्प लेना चाह रहा था। ये कह रही है कि जल्दी से बताओ कि अगर बस स्टॉप पे एक आदमी ऐसा खड़ा है जो देख नहीं सकता, एक आदमी ऐसा खड़ा है जो चल नहीं सकता और एक आदमी ऐसा खड़ा है जो बोल नहीं सकता, तो बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहे हैं। तो जब बस आएगी तो सबसे पहले बस कौन रोकेगा? एक बार दोबारा बताइए। मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहे हैं 3 आदमी। एक ऐसा आदमी है जो देखने एक आदमी सकता लीजिए, ये देखिए एक मैसेज और आ गया सर मेरे पास। मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, सारी प्रॉब्लम सुनूंगा। आप ये बताइए, मुझसे पूछ रहे हैं कि ये देखिए कितना झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है सर कि इनके गांव में लगातार 2 दिन तक बारिश हुई है। ये पॉसिबल है क्या सर? लगातार 2 दिन तक बारिश हो सकती है? अरे लगातार तो 6 दिन नहीं सर, गलत। लगातार 6 दिन हो सकती है सर। बीच में आ जाएगा सर। लगातार 2 दिन कैसे होगी? बात में भी तो होगी। मैं आपसे बात करना चाहूँ, मैं आपसे बात कर, ये लो आप ये मुझसे पूछ, मैं तो सर से पूछ रहा हूँ, इसलिए तुमने फोन कर सर को। सर एक बात बताइए, मैं सारा आपका इलाज करूँगा। मुझे किसी ने पूछा कि एक ऐसी चीज जो शादी से पहले सबकी होती है और पति की है,
पत्नी होती है। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है उसमें स्क्रीन में।